आईसीएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल और ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन नंबर 5 है। जो बच्चे ये डिक्टेशन लिख करके इसको टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और जो है आईसीएस होमवर्क आईसीएस कोचिंग सेंटर का जो ऐप है वो जैसे मतलब वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा और जो है वहाँ से वो लिंक से आप जो है इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम से उसमें फ़ोल्डर होगा, उसको परचेज़ कर लीजिए। परचेज़ करने के बाद जो है यूज़र आईडी के लिए आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और जिससे आपका यूज़र आईडी बना के हम दे देंगे वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से जैसे आप टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं। जो भी बच्चा इसको टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जानना चाहता है, कोर्ट्स की वैकेंसी हर स्टेट में आई हुई है बच्चों। तो लीगल डिक्टेशंस जो है 100 की स्पीड्स की अगर आप लिखोगे 105, 110 पहले तो उनको लिखिए। अगर उसको टाइप भी करोगे तो जैसे मतलब भी आपको जैसे आपकी जो एक्यूरेसी है उसका पता लगेगा, जो आप में गलतियां हैं वो निकल के आएंगी और जो है आपका कंसंट्रेट और अच्छा बेहतरीन होगा। और ये जैसे मतलब आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, ये साथ में जैसे मतलब भी एज ए बैकअप ले लीजिए और इसमें जो है आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। जो भी हम डिक्टेशन देते हैं या जो पहले से रिकॉर्डेड है उसमें बहुत सारी रिकॉर्डेड है डिक्टेशंस, तो उनको भी आप लिख सकते हैं और क्या कहते हैं जैसे मतलब भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें जो है 956 के आसपास वर्ड हैं, 956 के आसपास वर्ड हैं इस डिक्टेशन में। इस डिक्टेशन के अंदर लगभग 956 है। ये जैसे तो वेबसाइट है जिस पे जो है आप लोग वो कर सकते हैं जो आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और जिन बच्चों ने जैसे आज 8 बजे क्लास है, जिन बच्चों ने जैसे मतलब भी जो ऐप्स से ख़रीद लिया है या पहले से जैसे जो टाइपिंग अपना वेबसाइट ले रखी है तो वो जो है 8 बजे तैयार रहेंगे। 8 बजे जो आपका टेस्ट होगा जो है टाइपिंग टेस्ट, वो बता दिया जाएगा कौन सा नंबर होगा, तो उस टाइम पर आप सभी बच्चों को रेडी होना है। ठीक है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन। ये डिक्टेशन नंबर 5 के नाम से मिलेगी। माई कोर्सेज में जब जाओगे वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ में लिखा मिलेगा आईसीएस इंग्लिश लीगल डिक्टेशन का फोल्डर होगा, उसमें जो है आपको ये मिल जाएंगे। तो अब तक तो किसी बच्चे ने जैसे टाइप भी नहीं किया। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Learned counsel for the contesting respondents submits that the assistant registrar was well within his jurisdiction to have registered the list of office bearers, keeping in view the proviso contained in Section 4 of the Societies Registration Act as amended and applicable in the state of UP. He submits that the assistant registrar was within his authority to invite objections and thereafter register the list of office bearers, which has been done in the instant case. He further submits that the election officer Madan Singh has colluded with the appellants and has not appeared before the assistant registrar, which would not amount to lack of any evidence in support of the elections dated 14/9/2008. He further submits that the list of office bearers of the contesting respondents is a valid list and the contention raised on behalf of the appellants is without any substance. Having heard learned counsel for the parties, the first issue which has to be determined was the validity of the meeting that had been convened for the purpose of holding of the elections dated 14/9/2008. The meeting ought to have been convened by the outgoing committee and it could not have been a decision by persons who are not entitled to proceed with the elections. The order of the assistant registrar does not reflect on this issue, and even otherwise, the same would be a matter
of consideration by the prescribed authority while proceeding to consider any doubt or dispute with regard to the elections of office bearers. It is also on record that the elections which had been convened in the year 2004 were never held, and there was an ongoing dispute with regard to the alleged induction of 76 new members. It is also on record that the Joint Director of Education had found 328 members entitled to participate in election, which was a piece of evidence to be looked into before finalizing the Electoral College. Apart from this, if the elections of the Committee of Management of the Society were not held within time, then after such a finding is recorded by the prescribed authority, it is the Assistant Registrar who can proceed to hold the elections under subsection 2 of section 25 of the Act. In the instant case, the elections were not held after 2001. For all the aforesaid reasons, the order of the Assistant Registrar dated 23/2010 is unsustainable in law. In our opinion, the learned single judge ought to have set aside the order of the Assistant Registrar and remitted the matter to the prescribed authority for decision to accordance with the rules and the provisions of Section 25 of the Societies Registration Act 1860. The learned single judge therefore fell in error in relegating the appellants on the ground of availability of alternative remedy without setting aside the order of the Assistant Registrar, who was bound to refer the dispute in view of the provisions referred to herein above. Having heard the learned counsel for the parties, the court finds that the directions given by the learned single judge is in consonance with the policy framed by the Mandi Samiti. Perusal of the policy indicates that priority was to be given to those traders who had no shops allotted to them and who were paying the Mandi fee. Clause 1 of the scheme indicates that a list would be prepared from those eligible traders who had no shop allotted in their name and who were paying Mandi fee. Clause 1 indicated that the list would be prepared in the descending order, namely, that a trader who was paying the highest fee would be placed at serial number 1, and a person paying a lower Mandi fee would come at serial number 2, and so forth. In the light of this provision, the learned single judge found that there were 147 applicants and that the total number of shops constructed were 74 in number. The learned single judge accordingly directed that the Mandi Samiti would prepare a list of those applicants who do not have a shop in the market yard, either in the individual name or even as a partner of a firm. Such direction, in our view, is in consonance with the scheme framed by the Mandi Samiti, namely that the shops would be allotted to those traders who do not have a shop. The contention of the learned counsel for the appellant in special appeal number 272 of 2009 is consequently bereft of merit. At this stage, the contention of the learned counsel for the appellant that the Mandi Samiti has itself certified that the appellant do not have a shop and have arbitrarily been ousted from the list, and therefore a direction should be issued, is also bereft of merit. Such information was not before the learned single judge, nor such documents could be considered in the appeal. The submission of the learned counsel
for the appellant is that there was no error apparent on the face of the record, and consequently the order could not be reviewed by the learned single judge, is patently bereft of merit. He further submits that earlier order directing the shops to be allocated by draw of lots was in consonance with clause 6 of the scheme is wholly erroneous and misconceived. From a combined reading of clauses 1 and 2 of the scheme, it is clear that the list of eligible candidates who do not have a shop in the market yard was to be prepared in the descending order on the basis of the market fee payable by such applicants. The court clarified the scheme by holding that where the number of applicants are less than or equal than the number of shops, then in such an eventuality the shops would be allocated as per their names in the list, and that the use of lottery will not be for allocation of the shops but only for the choice of shops. तो ये लगभग 110 के आसपास रही है, ठीक है। सर स्टार्ट कैसे करें? समीर कुमार। स्टार्ट यानी कि अगर आपको शुरू से पढ़ना है बच्चों, तो जैसे मतलब भी आप जो है ऐप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ये, जैसे आपको भी मैंने दिखाया था, ये जैसे इस पे व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे 7206905115 पे, तो जैसे ही आप व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप करते ही आपके पास ऑटोमेटिकली लिंक जाएगा ऐप का। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप का नाम है ICS कोचिंग सेंटर ऐप। ICS कोचिंग सेंटर ऐप। इसको जब आप बच्चों इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे देखोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड। उस पर क्लिक करोगे, उसमें जैसे आपको हिंदी की क्लास है, शॉर्ट हैंड की जैसे अपना इंग्लिश स्टेनो की क्लास है बेसिक से, ये डिक्टेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ, इनका जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वेबसाइट वाला, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वेबसाइट की जो वैलिडिटी है बच्चों वो ऐप की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है और जो है वेबसाइट पर आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी, ठीक है। तो ये जैसे आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने UPSSC का फॉर्म भर रखे हैं, अपना असिस्टेंट वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, या UPSSC का, TSSB में आपने LDC क्लर्क वाले फॉर्म भर रखे हैं, राजस्थान में जो अभी निकले फॉर्म उसमें बोथ टाइपिंग मांगी हुई है, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें एक फीस में अवेलेबल है और जो है उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी जैसे कोर्ट में जो फॉर्म निकला है बच्चों, उसमें 2 टेस्ट होंगे आपके। उसमें 2 टेस्ट होंगे। एक तो है जैसे स्टेनो का, स्टेनो तो आपको लिखनी है और स्टेनो लिख करके वो टाइप करनी होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। और फिर दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। ये टाइपिंग का अलग से लेंगे। ये जो टाइपिंग का टेस्ट है इसकी 40 WPM स्पीड मांगी गई है। तो यानी कि जैसे दोनों टेस्ट होंगे आपके, स्टेनो का वो टाइप करना ही करना है जो उसको टाइम दिया जाता है, और जो है टाइपिंग का जो टेस्ट है वो आपका अलग से लेंगे वो। तो जैसे मतलब आपको हम जो है अलग से ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि भी अलग अलग आपको कोर्सेज दे रहे हैं, एक ही कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। अभी जैसे उसकी साल भर की वैलिडिटी इसीलिए रखते हैं, जैसे SSC का जो एग्ज़ाम है वो जैसे अगस्त में निकलेगा और जो है उसका जनवरी में जो है उसका स्किल होगा। अभी जैसे फरवरी का एंड चल रहा है तो आपके जनवरी तक आपके पास उसकी वैलिडिटी रहेगी। जनवरी तक जब आपके पास वैलिडिटी रहेगी तो यानी कि आपको एक ही फीस के अंदर, अगर पहली बात आपका मैं चाहूँगा DSSB में या UPSSC में जहाँ भी आपका जो फॉर्म वगैरह भरते उसमें आपको
आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर उसमें नहीं होता है तो एसएससी वाला है, तो एसएससी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इससे अलावा कोर्ट की जो वैकेंसी है बच्चों, कोर्ट की वैकेंसी अब फिलहाल टाइम पर सबसे ज़्यादा निकली हुई है स्टेनो की, और ये कोर्ट की वैकेंसी हर महीने निकल रही हैं। ये नहीं कि भी जैसे अभी निकली और अब बाद में नहीं निकलेंगी। तो आप जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, गूगल करोगे जैसे मतलब भी कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी, तो आपको जैसे पता लग जाएगा हाँ तो कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना है बच्चों। नमस्कार बच्चों।